Very quickly, let's read thyroid cancer. Let's read thyroid cancer. I'll try to make sure that ये आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट रहे सारे कुछ, राइट? आई मीन ये आपके काम आए कुछ, राइट? वेरी क्विकली वी विल डिस्कस. सब कुछ लिखा हुआ ऑलरेडी, थोड़ा बहुत लिखना है. नाउ पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, हर्थल सेल, मेडुलरी एनाप्लास्टिक और लिम्फोमा, ये सारे कैंसर्स हमें आपके साथ अभी फटाफट से डिस्कस करने हैं. नाउ कैंसर बनते कैसे हैं? हाउ डू द कैंसर्स फॉर्म? हाउ डू द कैंसर्स फॉर्म? राइट, फर्स्ट यू सी रेडिएशन. न्यूक्लियर एक्सीडेंट में लगी या बचपन में अगर आपके मरीज को लगी है रेडियोथेरेपी, राइट? नाउ शॉर्ट लेटेंसी एंड एग्रेसिव कैंसर दे अक्कर विद जीन म्यूटेशन. सो थायराइड कैंसर का एक कारण जीन म्यूटेशन भी है. अग्रेसिव कैंसर होते हैं रेट PTC3 जीन म्यूटेशन के साथ. लेस अग्रेसिव रेट PTC1. प्री एक्जिस्टिंग मल्टी नोडुलर ग्वाइटर में क्या होगा? फॉलिकुलर एडिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा. फेमिलियल मेडुलरी कार्सिनोमा, ये किसके साथ होगा? मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया. हाशिमोटो थायरोइडाइटिस के साथ आपके मरीज को क्या हो सकता है? लिम्फोमा. अगर किसी कारण से, ग्वाइटर की वजह से, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से आपके मरीज का TSH बढ़ा हुआ है तो क्या हो सकता है? पैपिलरी कार्सिनोमा. अगेन ये सारे सिंड्रोम एसोसिएटेड है. फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, गार्डनर सिंड्रोम, वर्मर सिंड्रोम, काउडन सिंड्रोम, मैकुने एल्ब्राइट सिंड्रोम, कार्नी कॉम्प्लेक्स, ये सब के सब थायराइड के कैंसर्स बनाते हैं, राइट? नाउ पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, इट इज द मोस्ट कॉमन thyroid cancer. So it is most common radiation induced thyroid cancer. Most common thyroid cancer in children. Most common thyroid cancer in children. Most common thyroid cancer with lymph node micrometastasis. Micrometastasis मतलब बीमारी नहीं फैलेगी, don't worry, right? Now, it is the most common thyroid cancer which is multi-centric in origin, multifocal in origin. Most common thyroid cancer which is TSH induced. Thyroid की बाकी सब बीमारियों की तरह this cancer is also common in females. Most common age 30 to 40 years, मतलब यंग लोगों के साथ, फाइन. नाउ मोस्ट कॉमन जीन म्यूटेशन B टाइप RAF, फाइन, या VT600E, फाइन. क्लिनिकल फीचर neck nodule. Now clinically your patient will be euthyroid. Euthyroid means thyroid hormone levels will be normal. Lateral aberrant thyroid is basically lymph node swelling due to metastasis. Right? So ये रहा lateral aberrant thyroid, lymph node swelling. Now initial investigation, like always, will be thyroid function test. If you get the radioactive iodine scan done, it will show you cold nodule. सेमोमा बॉडीज की फोटो उड़ गई PDF से, कोई नहीं, मैं ऐड कर दूंगा. सेमोमा बॉडीज, चलो जी, अपना इतना समय क्यों वेस्ट करना? जस्ट अलाउ मी 1 मिनट, मैं इसको फटाफट अभी ऐड किए देता हूँ. ये PDF से पता नहीं कैसे उड़ गई, डोंट वरी. What exactly are semoma bodies? Semoma bodies are concentric calcified structures. Right? Wait. When I converted it from Word to that PDF, उस समय ये उड़ गई शायद.
These are Semoma bodies. My apologies for that. Semoma bodies, right? So what exactly are Semoma bodies? Semoma bodies are concentric calcified structures. Now they are also seen in meningioma. Fine. They are also seen in cyst adenocarcinoma of the ovaries. Right. Then you see, what do we get to see? Orphan Annie nucleus. So ये कोई बहुत पुराने जमाने में कार्टून आया करता था, ऑर्फन एनी. ये रही ऑर्फन एनी. और ऑर्फन एनी हैड गॉट एम्प्टी आईज. वैसे ही न्यूक्लियस आपको दिखते हैं इसमें, राइट. सो यू गेट टू सी द एम्प्टी न्यूक्लियस, राइट. नो क्रोमेटिन, मतलब नो जेनेटिक मटेरियल देयर, ऐसा इमेज में नजर आता है. ओके. सो नाउ दीज थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. न्यूक्लियर ग्रूविंग, orphan any nucleus are slightly difficult to notice, right, for a pathologist. Now, treatment. If the tumor is confined to the thyroid gland, treatment is total thyroidectomy. Now, there is a catch. For less aggressive tumor, pathologist ने बता दिया कि माइटोसिस वगैरह नहीं है, tumor less aggressive है, and the tumor is less than 2 centimeter in size, we can also do hemithyroidectomy, but always prefer total thyroidectomy. Okay, if given in the option, always going for total thyroidectomy, right? Now, if a tumor has reached level 6 lymph node, what is the treatment? Total thyroidectomy plus central lymph node dissection. Right? Now, central lymph node dissection is when you remove the level 6 lymph node. इन दोनों लाइन से आपको क्या मतलब पता चला? So no prophylactic lymph node dissection. If the cancer has not reached the lymph node, don't fiddle with the lymph node. फिर उनको मत निकालो अगर lymph node बड़ी ही नहीं हुई अभी तो. If the cancer has reached other lymph node, treatment is total thyroidectomy plus central lymph node dissection plus modified radical lymph node dissection. Post-op thyroxine. What kind of thyroxine? Oral thyroxine is must to keep TSH low. Otherwise, फिर से क्या हो जाएगी? Recurrence. Now, prognostic criteria. Now there is an acronym MASCES, M for metastasis. So poor prognosis if metastasis present. What is the most common site of metastasis? Most common site of metastasis are the lungs. Poor prognosis if age more than 40. Poor prognosis if invasion of capsule of the gland is present. Remember, papillary thyroid carcinoma is always unencapsulated. There is no capsule around the tumor, and if there is capsule around the tumor, तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? लिंसे ट्यूमर. लिंसे ट्यूमर मतलब पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा के आसपास कैप्सूल है, राइट? नॉर्मली नहीं होता है. सो कंप्लीटनेस ऑफ एक्सिजन इफ नॉट डन, देन पुअर प्रोग्नोसिस. साइज if it is more than 4 centimeter, poor prognosis. Fine. Then rest of the criteria, ages, age. Again, age if more than 40, poor prognosis. Right? Grade, if it is a high grade. So what kind of concept is this? It is a pathological concept, right? Extra thyroid spread if it is present, poor prognosis. Size if it is more than 4 centimeter, poor prognosis. Ages, metastasis को extra thyroid spread को basically they divided it into 2 parts. So metastasis means distant spread. If it is present, poor prognosis. Where it goes to the lungs. एक्स्ट्रा थायराइड स्प्रेड मतलब लोकल, आसपास के स्ट्रक्चर को ही पकड़ लिया. एंड साइज इफ इट इज मोर देन 4 सेंटीमीटर, पुअर
prognosis. Okay. Now, second most common thyroid cancer is follicular carcinoma. Follicular carcinoma. Fine. So the common gene mutation associated P53, P10, PAX8. PAX8 मतलब paired box gene. ये कैसे जीन है? ऑनको जीन्स, राइट. P53 कैसा है? ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. Now it might occur in pre-existing nodule. Pre-existing nodule, that is multinodular goiter, fine, lingual thyroid. So that is why this cancer is common in iodine deficient areas. This cancer is common in iodine deficient areas. Iodine deficient areas. Now this is always covered by capsule. This cancer is always covered by capsule. Now FNAC is not useful to differentiate follicular cancer from follicular adenoma. So follicular cancer, you see, when the word comes cancer, that means it is a malignant swelling, and follicular adenoma, it is a benign swelling. So what we'll have to do? We'll have to do biopsy, and sometimes as a part of biopsy we will do hemithyroidectomy. Hemithyroidectomy is also done. तो यू डू हेमीथायरॉइडेक्टमी, फिर उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख लो, अगर मेलिग्नेंसी है देन यू डू टोटल थायरॉइडेक्टमी, अगर मेलिग्नेंसी नहीं है तो चलने दो, हो गई सर्जरी. फाइन. लिसन टू मी वंस. पेशेंट कम्स टू यू, देयर इज अ स्वेलिंग, यू डू द एफएनएसी, इट सेज फॉलिकुलर नियोप्लाज्म. क्लियर नहीं है कि कैंसर है या बिनाइन है. आपने क्या कर दी? हेमीथायरॉइडेक्टमी. माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखो, अगर कैंसर है मरीज को दोबारा वापस बुलाओ, पूरा ग्लैंड निकाल दो, अगर नहीं है छोड़ दो, हो गई सर्जरी. राइट. नाउ मोस्ट कॉमन रूट ऑफ मेटास्टेसिस, ब्लड. मोस्ट कॉमन ऑर्गन, बोन. सो दिस ट्यूमर, इट नेवर इन्वॉल्व्स लिम्फ नोड. लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट मतलब कहने का है कि बहुत ज्यादा रेयर है. लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट इज वेरी वेरी रेयर. नाउ which bones? Lumbar vertebrae, femur, thoracic vertebrae. Thoracic vertebrae. Treatment is same as papillary thyroid carcinoma. Now Hurthle cell carcinoma, पहले बोलते थे that this is just a variant of follicular carcinoma, but no, it is a separate entity. ऐसा इसलिए because the cells, they have abundant oxyphil content. Abundant oxyphil content. Oxyphil मतलब stain loving. Oxyphil मतलब stain loving, right? Stain loving content. Just give me a minute. Right now, this is very aggressive. Fine. So lymph node spread. Lymph node spread is common. Lymph node spread occurs early. ऊपर से ट्यूमर मल्टीफोकल, बाइलेटरल. राइट. नाउ सो इस ट्यूमर की प्रॉब्लम क्या है? इट टेक्स अप आयोडीन 123 लेस एविडली. ये आयोडीन 123 को उठाता ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ट्यूमर है. अगर मान लो आपने सर्जरी कर दी, मरीज को वापस बुलाया और उसका गला देखा कि शायद स्वेलिंग है, आपको श्योर करना है कि कैंसर तो नहीं है कहीं. बाकी कैंसर में आप आयोडीन टेस्ट करोगे, बाकी कैंसर आयोडीन उठा लेंगे, ये कैंसर नहीं उठाएगा. राइट. तो आपको क्या यूज करना है? टेक्नीशियम 99. टेक्नीशियम 99. और इसमें भी ट्रीटमेंट सेम एज पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा. राइट. एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, elderly females, right, 70 to 80 years. Okay. Aggressive. Berry sign is positive. Berry sign अब क्या है? Berry sign means tumor it involves the carotid artery, and you cannot feel the pulsation of carotid artery. ये रहा Berry sign. FNAC, it will show multiple mitosis, and this tumor is undifferentiated.
मतलब कि बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव ट्यूमर है। ट्रीटमेंट इट इज सेम एज papillary thyroid carcinoma. Now, treatment. Let's say if the tumor is inoperable, fine. In that case, what will you do? You will be doing chemotherapy with dabarafenib. That is the treatment if, let's say, you're not able to do surgery. Dabarafenib. Okay. Then we move to the next thing. If there is pressure over trachea, we will do isthmosectomy. Right? Now, medullary thyroid carcinoma, also called as medullary thyroid carcinoma. So sporadic cancer is more common. Sporadic cancer means there is no family history. Now this occurs in elderly, right? Now familial cancer, they are more aggressive and they are associated with multiple endocrine neoplasia 2A and 2B. Now, where does this cancer form? This cancer forms from the C cells derived from neural crest, right? And ultimobronchial body. So this tumor secretes prostaglandins, right? Now, serotonin. So that is why this tumor has got diarrhea. Most common clinical feature is neck nodule with diarrhea. Now, this tumor also secretes calcitonin, but hypocalcemia never occurs. Calcitonin आपको मालूम है, it is an anti-hormone of parathyroid. So it tries to lower blood calcium, but it will not be able to. Okay. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. Hypocalcemia does not occur in medullary thyroid carcinoma. Now, okay, so FNAC is going to show you a myeloid stroma, gel-like stroma. Fine. It is going to show you C cell hyperplasia. There is no role of iodine scan क्योंकि ये ट्यूमर थायरोसाइड से नहीं निकल रहा. Fine. Now, bone secondaries, they are osteoblastic. In follicular carcinoma, bone secondaries are osteolytic. Treatment. We stay one step ahead of the cancer. If the tumor is still inside the thyroid, treatment is total thyroidectomy plus central lymph node dissection. If tumor has reached level 6 lymph node, treatment is total thyroidectomy plus central lymph node dissection plus modified radical lymph node dissection. Fine. Now, for diarrhea, we will be giving octreotide. Fine. So let's say, octreotide is analog somatostatin. Okay. Now, screening. So screening, what we do, RET gene mutation is screened. Now, in men 2A, it can be done as early as 6 months, and in men 2B, we have to do it at 1 month of age. Right? Chemotherapy, adriamycin, vendatinib, and cabozantinib. Okay, जी. Next, tumor. I'm just trying to save your time, इसलिए थोड़ी speed है. Now, most commonly they are non-Hodgkin lymphoma B type. Again, they are common in females. Now, they are present in pre-existing Hashimoto thyroiditis. Rapidly enlarging painless neck mass, fever, night sweat, weight loss, pruritus. फाइन. ये सारे क्लिनिकल फीचर आपके मरीज में आएंगे. Okay. Now, patients never have hyperthyroidism, but they may have
hypothyroidism. They may have hypothyroidism at hypothyroidism at times, right? So यहाँ मरीज euthyroid नहीं होगा. FNAC is not useful. True cut biopsy is used. Response to irradiation is dramatic, and radical surgery is rarely required. Rarely required. So treatment is chemotherapy plus radiotherapy. Okay.